Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We have discussed about the states of matter, that is solid, liquid, gas, and plasma and bones, Einstein condensate. We have covered solid, liquid, and gas. Now we will discuss about other two states of matter. But before that, I have given you a question. Now we will discuss about that. Which one is more harmful, ice or cold water? Give reason. मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है इन लेटेंट हीट टॉपिक, दैट इज़ आइस और कोल्ड वाटर. कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, आइस या कोल्ड वाटर? नाउ बेसिकली आइस इज़ मोर हार्मफुल बिकॉज यू नो दैट एट ice absorbs the latent heat. So when it absorbs the latent heat, it means it is absorbing extra amount of heat energy. So when it cools down, it will leads to the release of more amount of energy, which leads to the burning effect. So therefore ice is more harmful than cold water at 0 degree Celsius. Now ice is more harmful than water at the same temperature because ice can absorb latent heat as well as the heat energy in order to attain room temperature. Same I am telling you. So water at 0 degree Celsius can absorb heat energy only to attain the room temperature. So जो water है वो सिर्फ heat energy absorb करेगा कि room temperature पे आ जाए, but ice अपनी heat energy release out भी करेगा side by side ताकि वो room temperature को maintain कर सके. So which one is more harmful, steam or water at 100 degree Celsius? Now कौन सा ज़्यादा harmful है, steam या water at 100 degree Celsius? Now the same concept is that steam is more harmful because it contains the latent heat of vaporization. Okay, now next our main topic is plasma. Now I will read the same line and tell you what is it means. Now we have discussed about three states of matter, that is solid, liquid, and gas. The two are plasma and Bose-Einstein condensate. So in this we will discuss about that. The four states of matter is your plasma. So what is plasma? Plasma, it is considered as the fourth state of matter. So particles of plasma are made of free electrons and ions. जो particles हैं आपके प्लाज्मा के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन से बने हुए होते हैं. नाउ कैसे बने होते हैं आप सबको पता है दैट solids are tightly packed, they have more intermolecular force of attraction. Liquids less intermolecular force of attraction, that's why they have intermolecular spaces between them. In gas they are least intermolecular force of attraction, therefore they can freely move. So when we keep on heating the gas particles, they convert into plasma. Means when we heat solid, it converts to liquid. When we heat liquid, it converts to gas. So when we keep on heating the gas, it converts to a new state, that is plasma. So what will happen when the plasma gets heated up? When the gas get heated up, it convert into plasma. So if it is an atom, it contains positive electron, it contains negative. So this negative electron will revolve in the orbit and comes outside the orbit, and this negative will become a free electron. Okay, so this free electron and this plus charge makes the atom neutral, makes this plasma a neutral in nature. But due to this free electron, it helps in conduction of electricity. Now see the points. Plasma consists of particles with extremely high kinetic energy. From where it comes? When we heat the gas molecules, we are giving the heat energy and it is converted into kinetic energy. So gas is heated, then due to the absorption of kinetic energy, it converts to plasma. So the atom contains proton and electron. Here it will split. यहाँ पे वो जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, वो स्प्लिट कर जाएंगे और स्प्लिट करने से वहाँ पे क्या बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, दस मेकिंग द स्टेट न्यूट्रल. मीन्स कि वो प्लाज्मा न्यूट्रल हो जाएगा नेचर के अंदर. नाउ अब जो ये फ्री चार्ज आया हमारे पास, जब भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इन 6th 7th 8th, that due to for electricity we need free ions or free charge particles. So this free charge particles helps in conduction of electricity. Okay, so electricity is conducted. So electricity is used to ionize noble gases. What do we mean by noble gases and making glowing signs? आप सबने देखा है, we have that fluorescent tube, we have neon tubes, plasma tubes,
plasma TVs. So it all works on the principle of plasma, that we keep on heating the gas particles. This gas particles gets converted into plasma state, and when they are converted into plasma state, this free electron will remove out, and this free electron helps in conduction of electricity. So due to that, our neon bulbs, our fluorescent tubes will glow and conduct electricity. See, fluorescent tube. Now our next example is that we have superheated form. We say that the stars glow. Actually, stars are the hot balls of gases. So stars are actually the hot balls of gases at high energy. You can say at high temperature or high energy. So when this high temperature leads to the change of gases into plasma, so they become the high hot balls of plasma, and therefore they glow. So this is known as superheated forms of plasma, that is stars. They are naturally one. Now, an artificial one is your plasma screen televisions and the fluorescent tube. Now next is Bose-Einstein condensate. आई होप आपको ये प्लाज्मा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. जो आप नियॉन कलर्स देखते हैं या प्लाज्मा टीवीज कहते हैं कि हमारा प्लाज्मा टीवी है, एक्चुअली दिस प्लाज्मा टीवी वर्क्स ऑन दिस प्लाज्मा कॉन्सेप्ट. They have 3 electrodes where we have free electrons. These free electrons helps in conduction of electricity, and therefore they get the color combinations of different colors, and we see the more clarity, and this is known as pixels basically. Now next is Bose-Einstein condensate. Now Bose-Einstein condensate is just the opposite of plasma. Remember, it is just opposite of plasma. Okay, now plasma is due to high amount of heat energy. So opposite means where we have low amount of heat energy, means वहाँ पे हमारी heat energy कम हो रहा है, means the particles are losing energy. Now see, first we will discover the history and then the actual concept. Discovered in 1995, Bose-Einstein condensates were made with the help of advancement in technology. Now, the Carl Weyman and Eric Cornell cooled a sample of rubidium. Basically, जो Bose-Einstein condensate था, जो ये 2 साइंटिस्ट थे, कॉर्नल एंड वेमन, उन्होंने सैम्पल लिया था रुबीडियम. रुबीडियम इज ए मेटल बेसिकली, एक एलिमेंट है आपका. With help of magnets and lasers to within a few degrees of absolute zero. This absolute zero means that you are reducing the temperature to zero. Means आपने वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं रखा. ये क्या इंडिकेट करता है कि जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है वहाँ पे आपका टेम्परेचर का रोल ज़ीरो होना चाहिए. मीन्स आपका टेम्परेचर वहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए. नाउ एट द सेट द टेम्परेचर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम नेग्लिजिबल. बिकॉज जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो वहाँ पे उस टाइम पे आपका पार्टिकल मूव नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा. जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को तो पार्टिकल मूव नहीं करेगा. पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट, as this brings down the kinetic energy, see, as this brings down the kinetic energy, the atoms no longer stay separated but they begin to clump together. तो वो एक दूसरे से क्लम्पिंग करना स्टार्ट कर देंगे, चिपकना शुरू कर देंगे. As the atoms join together they form super atom. So there we have superheated, here we have super atom which is cooled in nature. Now light slows down as it passes through BEC. Light slows down as it passes through BEC, Bose-Einstein condensate, helps scientists to study more about the nature of light as a wave and particle. BEC also shows property of superfluid which implies it flows without friction. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा आपका टेम्परेचर बेस्ड होता है. Now, see what is actually Bose-Einstein condensation. Condensation मतलब क्या होता है, that you are converting this gaseous into liquid and then liquid to solid by reducing the temperature. Fine. Condensation happens when several gas molecules come together and form a liquid. It all happens because of loss of energy. Condensation तभी होगा जब वहाँ पे एनर्जी रिड्यूस होगी. सो जब एनर्जी रिड्यूस होगी तो गैसेस
converts to liquids and liquids converts to solids. Now gases are really excited atoms. Gases बहुत ज़्यादा excited atoms होते हैं. When they lose energy, they slow down and begin to collect. आपस में स्टिक करना शुरू कर जाएंगे. कलेक्ट होकर वो वाटर वेपर से वाटर के फॉर्म में आएंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे. एंड जब हम इस लिक्विड को वापस कूल डाउन करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट. सो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. नाउ water H2O vapor in the form of steam condenses on the lid of your pot. When you boil water, it cools on the metal and becomes a liquid again. You would then have a condensate. आपके पास एक condensate आ गया. सो कंडेंसेट क्या कह रहा है कि आपने टेम्परेचर रिड्यूस किया, आपने काइनेटिक एनर्जी लूज की. नाउ द BEC हैपन्स एट सुपर लो टेम्परेचर, मीन्स बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे काम करता है. वी हैव टॉक अबाउट टेम्परेचर स्केल्स. हमने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा, दैट इज कैल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. सो एट 0 केल्विन, तो 0 केल्विन मीन्स कि वहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है. सो सारे मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाएंगे. जब सारे मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल्स विल नॉट कोलाइड एंड दे विल कंडेंसेट. नाउ व्हेन टेम्परेचर गेट्स दैट लो, यू कैन क्रिएट अ, तो आपने वहाँ पे क्या क्रिएट किया, बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट विद अ फ्यू स्पेशल एलिमेंट्स. नाउ दैट मीन्स हम जो दैट मीन्स जो बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो एक्जैक्टली अपोजिट है किसका, प्लाज्मा का. प्लाज्मा में वी आर गिविंग हीट एनर्जी, इन बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट वी आर लूजिंग द एनर्जी, मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू lose. Due to that, they are converted into a condensate form, which is known as Bose-Einstein condensate. Now, what we have studied about plasma, Bose-Einstein condensate. Now, what question you have to answer, as we have finished our chapter, that is matter in our surroundings. So you have to answer two questions. That first is, sponge though compressible is a solid. आपका स्पॉन्ज है वो सॉलिड है बट स्टिल आप कंप्रेस कर पा रहे हो उसे, क्यों. सेकेंड क्वेश्चन इज, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो बट हीट करने के बाद आफ्टर सम टाइम उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, वो चेंज ना, फिर भी हीट सप्लाई किया जा रहा है बट देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस, but class, please answer the questions that were asked in the videos. That's all for today. Thank you.